ठीक है, perfect. The recording has started and I'll start now. So like I said, I'll be working on the functions folder for today, right? So you have all these files available with you, ठीक है? So you don't have to open any file right now. I'll show you a few examples first and then we'll get started, ठीक है? So we'll be working on 4.2 problem, ठीक है? We'll be working on 4.2 problem. And like all the files that you will be getting for the next sessions as well, there's a PowerPoint in each folder, and that PowerPoint has all the examples along with what the function can do for you and the solutions as well, right? For everything that we have planned. Okay. So like again, just repeating, सारे sessions की तरह आपको कोई doubt है, आप please पूछिए, raise your hand, put the question in the chat. I'll come back after like 10-15 minutes, check the chat and answer your. Okay. Let me just wait for another minute because I had said 9:35. ठीक है, अब 9:35 हो गया है. Just take a screenshot, one of you, any one of you. ठीक है, कोई एक, please just raise your hand, any one of you. हाँ काशिफ, एक स्क्रीनशॉट ले लो. Only one person. एक स्क्रीनशॉट ले लेना for the participant list. ठीक है, and just put it on the group for Urut sir's reference. ठीक है. I don't know if we'll be able to take the entire screenshot together or in bits and Right, pieces. sir. I think we'll have to do it in 2-3 You do parts. that. You do that. You do that. You do that and just share it with Urut sir. Perfect. So great. Now what we are going to do today is we're going to look at some functions that allow us to count and sum the data, right? Allow us to count and sum the data based on some conditions. So I have a very simple data set here for different funds, right? So I have different mutual funds and equity funds mentioned here, okay? And I have around 247 funds mentioned with me. I have the rating, like what category they belong to, and उनका rating कैसे रहा है over a 3-year period, over a 5-year period, over a 10-year period. Simple data set, right? Now, when you come towards the right in column Y, I have this question available. I have these problem statements available here. Now, like I said last time, if you don't have the latest version of Excel, which is Microsoft 365, I would recommend you work on the Excel online version. I'll repeat it one more time for everyone's reference. You can go to this website called excel.new, right? Excel.new, and it'll ask you to log in. If you don't have an account, just create an account using your Gmail. And when you do that, it'll take you to a blank Excel file. If it does not, you can just click on this Excel option over here. And वो आपको एक Excel file open कर देगा online version में. And you can simply upload the file that I'm working on. You can upload the file there and you can perform whatever actions I'm doing on the online version itself. ठीक है? I hope that is clear. So in case you don't find the function that I'm showing you, I suggest you go to the online version. ठीक है? Perfect. Now coming back. So I hope you've understood what the data set is. Now, quick question. You can put the answer in the chat. If I want to hide the entire ribbon because I want some more area to work with, I don't want to zoom out a lot. I want to stay at a higher zoom level. And I also want the ability to, see more rows. I want to hide my entire ribbon. What is the shortcut that I can use for this? Just put it in the chat. What is the shortcut that I can use to hide the entire ribbon? जो ऊपर options available होता है, tabs or ribbons, उसको hide कैसे कर सकता हूँ मैं? You can just put it in the chat. Correct. Control Shift F1, right? So I'll simply press Control Shift F1 or Control Shift Function F1 because अभी मुझे फॉर्मूला लिखना है, मुझे और किसी चीज का कोई वो नहीं है, नीड नहीं है. ठीक है, perfect. Now in Excel there are a lot of functions for counting. So count को reference करते हुए there are many functions. So you have count, count A, count blank, count if, count if s. ठीक है, we look at the most important ones. Now if you just simply want to do a count on the number of rows that are there, right? But so you will use the count function. ठीक है, आप यूज करोगे count function. But count function अगर आप definition पढ़ोगे, count function का अगर आप definition पढ़ोगे, so it is basically counts the number of cells in a range that contain numbers. ठीक है, so whatever list you provide, whatever cells you provide to the function, if it has text, it will not count it. It can only understand numbers. This function can only understand and count numbers. ठीक है, so when I say count, it will take multiple values or I can supply an entire array. So if I want to count the number of funds, right? If I want to count the number of funds, I cannot come to the fund column जहाँ पे मेरे funds का list है. I will do a control shift down to come back down. ठीक है. Now if I have to go back to the cell जहाँ मैं formula लिख रहा था, एक option तो है कि मैं scroll करूँ, but वो बहुत efficient नहीं है. जब मैं formula लिख रहा हूँ और मैंने एक range select किया और मुझे उस cell में फिर से जाना है where I've written the formula, I will press control backspace. Control backspace is the shortcut that will bring me back to the formula cell. I close, it will not give me any results. Why is it not giving me any result? Because the count function does not understand text, so it's not able to count text.
So what I'll do is I'll use another function over here, which is count a, right? Now count a is not necessarily for counting text, but if you look at the definition of count a, count the number of cells in the range that are not empty. So anything that is not empty in a cell will be counted. So all the blank cells will not be counted. All the non-empty cells will be counted. अब उन non-empty cells में number है या text है, इस function को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? So मैं वो same range A3 to A249 अगर count A में supply करूंगा, so it tells me that there are 247 funds. There are 247 funds. I'll display the formula also on the side. आप अभी मत कीजिए, मैं आपको 3-4 एग्जांपल, 2 एग्जांपल दिखाऊंगा, फिर आप करिएगा, ठीक है? Perfect. So this is count A. Count will only count numbers. Count A will count non-empty cells. So that range can have numbers, text, anything that you want. Now I have this column called return grade. ठीक है? Now इसमें 4 return grades हैं. ठीक है? मैंने filter अप्लाई करने का शॉर्टकट है Alt A T या Control Shift L, और ये filter के ड्रॉप डाउन को देखने का ऑप्शन है Alt down arrow key. I can go to that cell W2. Alt down arrow key will give me this filter drop down. So I can see that there are 4 return grades available with me. There are 4 return grades available with me. Right now I have 247 rows, so I can apply the filter and check. But there is a method of doing this as well. There's a method of doing this as well. अब दो तरीके हैं. एक तरीका ये है बिना formula method, without using the formula. I can simply copy this range, control backspace to come back up. I'll just come 2 rows to the right. Okay, I'll paste it over here. Control C, Control V. I will just enable my ribbon. Okay, and in the data tab, in the ribbon, okay, I have this option called remove duplicates. I have this option called remove duplicates. In the data tools group, this is my tab, data is my tab, data tools is my group, and here I have the option called remove duplicates. Do you see this? So I can click on that option, then it will open this dialog box for me, okay, where it is asking me that does my data set have headers? So this column that I'm working on does not have any header row. So data is starting from the very first row where the value is present. So I'll simply say choose the column AB. I'll press OK. तो वो उसी column से मुझे duplicate values हटा के जो remaining values है, distinct values हैं, वो मुझे display कर देता है, ठीक है? तो एक तरीका तो ये है विदाउट फॉर्मूला. तो अगर आपको यूनिक रिटर्न ग्रेड चाहिए, यानी डिस्टिंक्ट रिटर्न ग्रेड चाहिए, तो आप इस तरीके से करके आप कॉपी करके यहाँ पे उसको पेश कर सकते हो. एक तरीका तो ये हो गया. दूसरा तरीका क्या है? What you can also do is you can use a function. ठीक है? Before I show you that function, can any one of you tell me the difference between? Can you not hear me, guys? Am I audible properly? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. You are Yes, sir. audible. Tarannum, you will have to check something at your system. Okay, perfect. So before I move to the formula, I want you to tell me what is the difference between unique and distinct. आप chat में डालिए. You can raise your hand. हाँ, Ophian, you can answer. Sir, unique means that the only thing which is available in that place, and they have no match other than anyone else have no match than this. And Okay. distinct means which is quite different and have more properties and more features than other one. ठीक है. So you're absolutely correct. Just to simplify it for everyone else reference, unique will only appear once. Distinct is something that is appearing more than 2 times, right? So that is a distinct key. Unique is that is something that is absolutely appearing only one time. तो यहाँ पे जो मेरे रिटर्न ग्रेड्स हैं ये डिस्टिंक्ट है. इनमें से कोई भी रिटर्न ग्रेड यूनिक नहीं है, बिकॉज हर एक ग्रेड जो है वो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, ठीक है? सो नाउ वन वे इज यू कैन डू द रिमूव डुप्लीकेट्स यूजिंग दैट ऑप्शन, कॉपी एंड पेस्ट. आप ओरिजिनल डेटा सेट पे नहीं करोगे. ये ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन जब आप कर रहे हो जिसमें आपको डेटा को छोटा करना है, डेटा को रोज डिलीट करना है, कभी भी आप ओरिजिनल डेटा सेट पे नहीं करोगे. यू विल कॉपी दैट सेट, मूव इट समवेयर एल्स एंड परफॉर्म दैट एक्शन. If I want to do it using formula, I have a function in Excel in the newer versions. Again, those who don't have it, go to the online version. Those who have it, practice. Okay. There's someone in the waiting room. We'll not be allowing them in. Right? They can go back and watch the recording. You can just, any one of you, just put the message in the group. Okay. So unique में क्या है? I can give my array. So my array is from W3 से W247. So I'll just do a control shift down. मैं पूरा range select कर लेता हूँ जहाँ पे मेरे return grades available हैं. वापस उस सेल पे आने के लिए where I was writing the formula, I'll press control backspace. So control backspace will bring me back to that cell. And now here I am not concerned with any of the other arguments. इस formula में दो और arguments है, अभी मैं उनके साथ concerned नहीं हूँ. I only want to use the first argument. I press enter and it will display my 4 unique values for me. Right? It will display my 4 unique values for me. ठीक है?
So either if you don't have this, you can use the other method that I show you, which is copy the data set and go to remove duplicates option in the data tools group in the data tab. Okay. Now, if you want to count the unique categories, आप एक तो तरीका ये है कि आप यूनिक वैल्यूज को अलग से डिस्प्ले करो और फिर आप देखो कि क्या काउंट है उनका। अगर आपको उसको एक फंक्शन में यूज करना है तो अभी यहाँ पे आई कैन यूज अ काउंट ए, क्योंकि काउंट विल ओनली वर्क विद नंबर्स एंड आई कैन सी दैट आई हैव 4 यूनिक कैटेगरीज, ठीक है। बट इफ आई वांट टू डू बोथ ऑफ दीज थिंग्स, get the unique list and get the count in the same function, get the unique list and get the count in the same function, please see what I will do. So I will say that first I want to create a unique list. Okay, first I will say that I want to create a unique list. I'll not complete my formula, I'll come to the beginning of my formula and before unique I will say count a. और काउंट ए में क्या इनपुट दे रहा हूं मैं, जो यूनिक आर्ग्यूमेंट है। सो एज यू सॉ अबव, जब मैं यूनिक रन करता हूं, यूनिक फॉर्मूला में रन करता हूं, यूनिक फॉर्मूला का आउटपुट क्या होगा इस केस में, 4 डिस्टिंक्ट वैल्यूज, एवरेज, अबव एवरेज, हाई एंड बिलो एवरेज। नाउ उन वैल्यूज को मैं डिस्प्ले नहीं कर रहा हूं सेल्स में, आई एम सप्लाइंग दैट एज एन आर्ग्यूमेंट टू द काउंट ए फंक्शन। सो काउंट ए में अपार्ट, rather than going and choosing those range of cells, because count a, if I choose the range of cells, it will give me the total count. So I want the count of only the values that are unique. So first I take my array, which is W3 से W249, उसको मैं unique में डालता हूँ, जो मुझे 247 रोज की जगह सिर्फ 4 रोज देगा। Do you see the result at the top? ठीक है, वो 4 रोज देगा मुझे। And once I have those 4 rows, what I will do is I will supply them to the count a function, which will then tell me the count of the unique categories. Which will then tell me the count of the unique categories. ठीक है, which will then tell me the count of the unique categories. Please open this file 4.2 problem and please try these two examples. Please open 4.2 problem and please try these two examples. In case anyone has any questions, please raise your hands. If you have any questions, or else you can try the example. ठीक है, अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, please ask. Do not hesitate in asking questions. You can put the questions in the chat as well. Correct, Mohammed, you are correct. So unique is one, distinct is more options. No questions, which means I'm assuming that you are practicing and you have understood it. Once you're done with the example, put 200 in the chat. 200. Once you're done, you can put 200 in the chat. How can we get only unique outputs? Samia, I'll show you that also. उसका जो last argument है उसमें you can supply. So जो unique function है ना, why is my audio repeating? जो unique function है, is someone connected from 2 devices? Kashif, nahi. I think you connected from 2 devices. Can you just mute yourself? हाँ, ठीक है. Now it's not echoing. So to answer Samia's question, यूनिक फंक्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट यूनिक वैल्यूज नहीं देता है, बाय डिफॉल्ट वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज देता है। अगर आपको यूनिक वैल्यूज चाहिए तो आपको उसकी लास्ट आर्गुमेंट में जाना पड़ेगा। सो यूनिक जो फंक्शन है उसमें सेकंड आर्गुमेंट में स्किप कर दूंगा क्योंकि दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। आप लास्ट आर्गुमेंट अगर देखोगे तो उसमें इट टेल्स यू, इफ यू राइट इट ट्रू, इट विल टेल यू आइटम्स दैट एग्जैक्टली अपीयर एग्जैक्टली वंस, व्हिच इज यूनिक। बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स होता है, अगर आप उस आर्गुमेंट को सप्लाई नहीं भी करते तो बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स देता है, व्हिच इज रिटर्न एवरी डिस्टिंक्ट आइटम। सो आइडियली यूनिक जो है वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज देता है। अगर आपको यूनिक वैल्यूज चाहिए तो आपको लास्ट आर्गुमेंट में आके ट्रू लिखना पड़ेगा। दैट इज हाउ यू कैन गेट दैट। कूल।
Just give me a minute. So I think most of you have put 200. What about the others? We have 61 people on the call. Would request everyone to try the example. Please try the example, everyone. I'll wait for one more minute, then I'll proceed to the next one. Okay, great. Now, I hope these examples are clear. Let me display this formula as well. Okay. Now, let's come to the last question in this sheet, which is count 10-year SIP returns which are unavailable. Okay. So there's a column called 10-year SIP returns, which is column number S. Okay. Right, column number S में I want to count the number of returns that are not available. यानी किस fund के, because each row represents data for a single fund. I have data for 247 funds. I want to see for which of the funds this information is not available, which is 10-year SIP return. Now, if I look at this column, right, I press Alt down arrow key to see the filter drop down. तो जहां पर भी availability नहीं है किस चीज का रिटर्न रेट का, वहां पे डबल डैश डाला हुआ है. सो द वैल्यू इज नॉट ब्लैंक. तो मैं यहाँ पे काउंट ब्लैंक यूज नहीं कर सकता. काउंट ब्लैंक अगर मैं आपको दिखाऊं तो इट इज नथिंग बट, इफ आई जस्ट गिव यू सिंपल एग्जांपल, ठीक है, एंड लेट्स से दिस सेल इज ब्लैंक एंड आई से इक्वल टू काउंट ब्लैंक एंड आई गिव सप्लाई दिस रेंज, तो इसका आंसर होगा 1 बिकॉज देयर इज ओनली वन ब्लैंक वैल्यू. लेकिन इन केसेस वेयर there is no value present, where there's a double dash, right, like you see here, where there's some value na likha hua hai ya kuch bhi likha hua hai apart from a number, right, in this column you can see that there is some different value. We can clearly see that, which is a double dash, right. What we will do here is I still want the count कि मुझे count देखना है how many funds do not have this data available for them. 10-year SIP return का data कितने funds के लिए available नहीं है. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, I will count the entire column, count the values of that entire table in that entire column. So I'll say count A because count A will not take into consideration whether it is a text or a number. It will count all cells which are non-empty, right? Because in this data set, in this column 10-year SIP return, जहां पे भी value नहीं है वहां पे dash डाला हुआ है, which represents non-empty. So I'll simply do a control shift down, control backspace to come back to my formula cell, and I'll press enter. It tells me there are 247 total rows, basically non-empty cells. Now I want to get the count of rows that do not have a number in them. So I will subtract the count. I'll use the count function because जो count function है, ये same range दूंगा मैं इसमें. I'll give the same range here. ठीक है. जो count function है, that basically will tell me if I see the result of the count function, it is going to be 170, right? If you see at the top, और ये this feature is also available in Excel. पहले नहीं होता था. Excel never used to tell you intermediate calculation का result क्या है when you're writing a long formula, right? Or writing multiple functions inside a single formula. इंटरमीडिएट स्टेप का रिजल्ट आपको कभी नहीं दिखता था. अभी आप अगर हाईलाइट करोगे एक पार्ट को तो इट टेल्स यू द रिजल्ट. तो इसका रिजल्ट 170 है, इसका रिजल्ट इज 247. 247 इज नथिंग बट द टोटल रोज. 170 is nothing but the count where the value is present, where a number is present. And I wanted the count of values जहां पे डेटा नहीं है, which were not blank, they had a dash. So this will tell me the count, which is 77, which is 77. Think about the example. If you have any questions, let me know. Okay. Think about the example for a minute. If you have any questions, let me know. Yes, Kashif. Is it possible to do it with count if and then within inverted commas we put double dash? Will it give the output? Yes, that will also give you the output. Okay. Yeah. But the idea is that a lot of times some values might be, somewhere there might be a single dash, somewhere there might be a double dash because of bad data present. कभी-कभी system से ही वैसा data आता है. So in that case, you can use this. If there's one single item that is repeated across all the non-empty, all the empty cells,
like a double dash or an NA, in that case, you can Mhm. use the one that I just showed you. Okay. Thank you. Yeah. Great. Please try the example, everyone. I'll wait for a minute or two before proceeding to the next one. If you're done with the example, please put a 200 in the chat. नगमा, काउंट में अगर आप एक रेंज ऑफ वैल्यू सप्लाई करोगे तो उस रेंज ऑफ वैल्यूज में से अगर उसमें अगर नंबर्स होंगे तो सिर्फ वो नंबर्स काउंट कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास A1 से लेके A10 रोज सेल्स में नंबर्स हैं तो आप काउंट यूज करोगे। अगर उसमें कोई टेक्स्ट वैल्यू है तो वो उसको इग्नोर करेगा। और जो काउंट ए फंक्शन है वो नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है, बेसिकली समथिंग दैट इज नॉट एम्प्टी। तो अगर सेल में वैल्यू है, वेदर इट इज अ नंबर, अ डेट, अ टेक्स्ट, वो उसको काउंट करेगा। सो काउंट विल ओनली काउंट नंबर्स, काउंट ए विल काउंट एवरीथिंग that is not empty basically. Anywhere there is a value, it will count that. Great. I hope Nagma that was clear. ठीक है. Please come to the next sheet, which is count if. अब all the other sheets, obviously we will not be able to do all the examples, right? So what I'll do is I'll show you a few examples. ठीक है. I'll show you a few examples and rest you can go back and practice. ठीक है. काउंट एरर्स और काउंट इंस्टेंस में आपको करा दूंगा, बट काउंट इफ एस, सम इफ एस में हम सारे एग्जांपल्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में 15 मिनट्स वी विल स्पेंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, और आई जस्ट डेमोन्स्ट्रेट द एग्जांपल्स। बाकी आपके पास सॉल्यूशन फाइल है। तो राइट नाउ ऑन माय स्क्रीन एवरीवन, आई एम ऑन द काउंट इफ शीट, आई एम ऑन द काउंट इफ शीट, राइट। व्हाई इज दिस फ्रोजन? ठीक है, एनीवेज, ओके। नाउ काउंट इफ इज नथिंग बट, काउंट में कोई कंडीशन नहीं है। काउंट में आप एक रेंज ऑफ वैल्यू देते हो, रेंज ऑफ सेल्स देते हो और उसका काउंट निकालते हो। Count if is nothing but you are counting basis a condition. You are counting basis a condition, right? So if I want to count in the riskometer column, I have this column V is my riskometer column. I have different risks associated to each fund, risking grade. So I want to count how many funds are categorized as very high in the riskometer column. So I will simply start by writing my formula. I'll say equal to, let me just unfreeze everything. Just give me a second. I don't know why it is frozen. And let me just unfreeze it. Perfect. Okay, cool. So I say equal to count if. Now count if will count the number of cells within the range that meet the given condition. Okay. So count if में you have to specify your range. तो मेरा range इस केस में है कॉलम V, बिकॉज मुझे कॉलम V में काउंट करना है। अब यहाँ पे आप पूरा कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हो या उन स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल्स को भी सिलेक्ट करते हो, क्योंकि इट विल ओनली काउंट वेयर एवर द रोज आर इक्वल टू द वैल्यू दैट यू स्पेसिफाई, वेयर एवर द रोज आर इक्वल टू द वैल्यू दैट यू स्पेसिफाई। तो अगर आप पूरा कॉलम भी सिलेक्ट करोगे तो विल नॉट मेक अ डिफरेंस, और यू कैन सिलेक्ट ओनली फॉर द रेलेवेंट रोज। कंट्रोल बैकस्पेस टू कम बैक अप। तो पहले मैं रेंज डिफाइन करूंगा कि किस रेंज में मुझे काउंट करना है। क्राइटेरिया डिफाइन करने के लिए, anytime you are defining a text inside a formula, it will always come in double quotes. It will always come in double quotes. तो आप इस तरीके से very high लिखोगे, you close the bracket and tell you that there are 117 funds that are categorized as very high. There are 117 funds that are categorized as very high. Now remember Excel is case insensitive. तो अगर मैं very high यहाँ small में भी लिखता हूँ तो मुझे आंसर आएगा, जबकि उस कॉलम में very high जो है, it is mentioned only in caps, right? Very high is mentioned, the first letter is mentioned in an uppercase for in both the words, but in the formula if I write it in any format for some reason, ठीक है, Excel will still be able to give me the output because Excel is case insensitive, ठीक है, Excel is case insensitive, ठीक है, remember that Excel by default is case insensitive. अभी के लिए I'll just write it in normal format, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। The other method is that you can count wherein you don't manually define the criteria in a formula. You get the criteria from a different cell. What I mean by that is, again I'm going to write the same function. I'll just copy this function, copy करने के लिए double click on the cell,
Control A, Control C, escape, come to the cell where you want to paste it, double click, paste, and then edit whatever you want. Now in this area, in the criteria argument, I don't want to hard code the criteria as very high. I want the user to choose dynamically. What I can do is I can specify a cell. Let's say I specify Y6 and I press enter. I'll just color Y6, voltage. ठीक है, I'll just color Y6 in a different color. ठीक है, तो अब 0 है because Y6 में कोई criteria mention नहीं है. तो आप देख रहे हो आपका जो criteria आ रहा है that is going to come from the cell Y6. If I mention very high here, it will tell me the criteria. If I write high, right, और क्या है इसमें, we have low. So if I write low, it tells me the count for low. Okay. Now, one method is you allow the user to type in the input, but this is also a hassle because the user has to know what are categories are available. So the other step that you can do is I'll write both these formulas to the side so that you can see both of the formulas. The other thing that I can do is I'll just copy the same formula, Control C, Control V. Okay. Now, यहाँ पे rather than supplying the argument from a different cell where the user has to type, I can supply the argument from a different cell, this one, right? And the difference is that in this cell, I have created a data validation. I'll show you how to do that also. So in this cell, I have created a data validation, which is nothing but the user can simply come and choose from a range of values that are predefined by me, that are predefined by the creator of the dashboard, and the output will differ basis those selections. The output will differ basis those selections. Okay. Now, how do you create a data validation? Data validation का use कहाँ होता है? So just to show you, right? Whenever you're traveling, airline, bus, train, whatever mode of transport you use, right? And where's the web check-in? ठीक है. So यहाँ पे जैसे on this airline website, when I have to do the web check-in, firstly it asks me to choose from a drop down here, which only has one option for some reason, right? And here I have to put in my booking reference number and my last name. Okay. Now, do you see it says that the booking reference number is a sequence of 6 letters and or numbers. It can be found on any ticket or itinerary. Data validation is not just creating a drop down list. Data validation means restricting the user from putting any random value. You predefine the checks so that the user can only put in the predefined values and आपका data clean होगा. Because आप user को restrict कर रहे हो कि आप इन्हीं 5 वैल्यू में से choose कर सकते हो, तो इसके अलावा आप कुछ डालोगे नहीं. तो if you're collecting data from 100 people and you have added data validation on different cells, you can ensure that the data coming in will be very clean because you have set the values pre-hand or beforehand or before you share it with the user. So data validation is a concept by general जो हर जगह होता है, ठीक है? In programming, in softwares, Excel में also you can use that concept to create a drop down list, ठीक है? एक बार देखिए drop down list कैसे बनाते हैं. I can go to data again. Data tab में आया हूँ मैं. Data tab में I can come to data validation, which is in the data tools last option over here. When I click on that, by default अभी क्योंकि मैं इस सेल पे हूँ जहाँ पे data validation already created है, तो इस केस में आपको ऑलरेडी दिख रहा है. अगर आप न्यू यूजर हो या फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो किसी ब्लैंक सेल पे जहाँ पे डेटा वैलिडेशन नहीं लगा हुआ है, जैसे लेट्स से ऑन अ डिफरेंट सेल, लेट्स से दिस वन जो मैंने येलो मार्क किया था, अगर मैं वहां डेटा वैलिडेशन क्रिएट करने के लिए जाता हूँ तो इट विल टेल मी दैट राइट नाउ आई हैव नॉट चोजन व्हाट काइंड ऑफ अ डेटा वैलिडेशन आई वांट टू चूज. ठीक है. सो जब आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए तो आप लिस्ट चूज करोगे. जो बाकी है वो मैं किसी और दिन कवर करूंगा. बट जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, व्हेन आई से डेसिमल एज अ डेटा वैलिडेशन, यूजर उस सेल में सिर्फ एक डेसिमल वैल्यू डाल पाएगा, होल नंबर नहीं डाल पाएगा. व्हेन आई से होल नंबर एज अ डेटा वैलिडेशन, यूजर विल ओनली बी एबल टू पुट होल नंबर, नॉट एनी decimal value. If I say date, user will only be able to put a date. If I say time, user will only be able to put a time. If I say text length, that only, जैसे in the case of PNR आपने देखा कि 6 characters are allowed, so I can specify that as well. So user will not be able to put more than 6 characters. Custom में we can write a formula. When we cover this in detail, I'll show you the examples. अभी के लिए just understand list. List बड़ा simple है. List में आपको source define करना है list का. तो list का source define करने के लिए या तो आप manually define कर सकते हो. मैं I can literally start writing very high, high, comma, low. अभी 3 ही लिखता हूँ मैं. I can manually add these, right? I can manually add. Remember, it is not case sensitive. तो अगर मैं high lower case में भी लिखता हूँ with a lower case h and I press OK and I come here and I choose high from here, it will still give me the result. And if I show you the count
for both of these, it is going to be exactly the same. So do you see, Excel is not case sensitive. Excel is not case sensitive. ठीक है? Excel is not case sensitive. दूसरा तरीका है डेटा वैलिडेशन डालने का, that you can simply select the entire column. जिस कॉलम से आपको वैल्यूज लेनी है, आप उस पूरे कॉलम को चूज करो इन द सोर्स. ठीक है? प्रेस ओके एंड इट क्रिएट्स द डेटा वैलिडेशन फॉर यू. इट क्रिएट्स द डेटा वैलिडेशन फॉर यू. तो अभी अगर मैं यहाँ आऊंगा तो डेटा वैलिडेशन विल ऑलरेडी बी क्रिएटेड फॉर मी. ठीक है? इन द ओल्डर वर्जन्स इफ आई चूज द इंटायर कॉलम, वो सारे कॉलम्स के वैल्यूज को पॉपुलेट करेगा. वो क्या करेगा? सारे कॉलम्स के वैल्यूज को पॉपुलेट करेगा, जो मुझे नहीं चाहिए. आई वांट डिस्टिंक्ट वैल्यूज इन ड्रॉप डाउन. इन ड्रॉप डाउन आई एसेंशियली वांट डिस्टिंक्ट वैल्यूज. So what you can do is you can either create a unique list somewhere and then reference that in the data validation. So what I can do is I can say equal to unique. I can choose this and I can reference this unique list in the data validation. अगर आपके पास unique function नहीं है तो आप इस लिस्ट को कहीं और कॉपी करोगे, एक रेफरेंस शीट में और एक हेल्पर शीट में या हेल्पर कॉलम में सेपरेटली. उसमें से रिमूव डुप्लीकेट्स करोगे डेटा में जाके, डेटा एंड रिमूव डुप्लीकेट्स यहाँ से. तो आपके पास सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज बचेंगी, फिर आप उसको डेटा वैलिडेशन में रेफर करोगे. राइट? इन द ओल्डर वर्जन्स इफ यू सिलेक्ट द एंटायर कॉलम इन डेटा वैलिडेशन व्हिच इज 247 रोज, इट विल गिव यू 247 वैल्यूज इन द ड्रॉप डाउन व्हिच यू डू नॉट वांट. तो वो लो को 10 बार रिपीट करेगा. अगर लो 10 बार रिपीट हो रहा है इन द कॉलम तो उनको 10 बार रिपीट करेगा. राइट? प्लीज ट्राई दिस एवरीवन and let me check if there's any question. Okay, please try this. If you want me to repeat something, do let me know. If you're done with the example, you can put 300 in the chat. Okay, you can put 300 in the chat. और अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, डेटा वैलिडेशन है, काउंटिव है, प्लीज आस्क. इफ यू अंडरस्टूड, प्लीज डू द एग्जांपल. Sure, Musharraf. So I'll just create the data validation here again, Musharraf. ठीक है? तो पहले मैं सेल को चूज करूंगा मुशर्रफ, उसके बाद मैं डेटा में जाऊंगा, देन आई गो टू डेटा वैलिडेशन इन द डेटा टूल्स ग्रुप. राइट? देन in the any value drop down I'll choose list. In the source I'll simply come and select the entire column. I'll come and select the entire column. I'll press OK and will create the drop down for me. If you are on an older version and you are seeing 247 values here, I mean a large set of values, यानी हर वैल्यू मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है, जितनी बार वो इस कॉलम में रिपीट हो रही है, उस केस में व्हाट यू विल हैव टू डू इज आइदर यू कैन कॉपी दिस कॉलम. ठीक है? क्रिएट अ हेल्पर शीट, वैल्यूज पेस्ट करो, चूज करो कॉलम को, डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट्स करो. ठीक है? यहाँ से आप बोलोगे, क्योंकि मैंने हेडर कॉपी किया तो यहाँ पे यू विल हैव टू चेक माय डेटा हैज हेडर्स, वरना जो हेडर है वो भी लिस्ट में आ जाएगा. आई सिंपली से ओके. तो यहाँ पे इट विल टेल यू दैट दीज आर द distinct values that are remaining. Then you can count here, come to data validation, and in your source, rather than choosing the entire column, you can also come to this sheet and choose these set of values. Okay? That would allow you to have only list of distinct values. That would allow you to have set of distinct values. Great. Please try the example, everyone. If you have any questions, do let me know. Oh. And remember, when you create a data validation from a different source, यानी आप मैन्युअली वैल्यूज नहीं लिख रहे हो डेटा वैलिडेशन में, आप कहीं से सोर्स को रेफर कर रहे हो. अगर आप सोर्स डिलीट करोगे तो डेटा वैलिडेशन में वैल्यूज अपडेटेड नहीं रहेंगी. ठीक है? जैसे अभी मैंने जो शीट बनाई थी मैंने डिलीट कर दी, इसमें अगर मैं क्लिक करूं तो मुझे कोई वैल्यू दिखेगा ही नहीं. राइट? बट जो ऑलरेडी वैल्यू प्रेजेंट थी वो रहेगी, बट इफ आई क्लिक आई विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग बिकॉज आई डिलीटेड दैट शीट. सो इसका सोर्स अगर डिलीट कर दोगे तो डेटा वैलिडेशन विल नॉट वर्क. Great. A lot of you have done the example. Anyone, any questions?
Please raise your hand if you have any questions. Okay, great. The other two guys you can do. Okay. Count if I'll do a demo. I'll do a demo on the second example. So first or third wala right now. I'll do a demo for you. Anyways, we're recording the session, so you can go back and have a look. Okay. I'll show you the second one, which is this one. Let me just minimize. Count riskometer with high and 10-year SIP return. ठीक है. तो बेसिकली मुझे दो कॉलम्स के बेसिस पे काउंट चाहिए. एक है मेरा रिस्कोमीटर कॉलम और एक है मेरा 10-year SIP रिटर्न कॉलम. सो व्हेन यू स्पेसिफाइंग टू कंडीशंस इन अ काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ में तो आप एक ही कंडीशन कर सकते हो. तो इस केस में क्या करना है, इफ देयर आर मोर देन वन कंडीशंस तो आप काउंट इफ एस यूज करोगे. आर्ग्यूमेंट फंडामेंटल वही है. जैसे काउंट इफ में आपका रेंज एक था, क्राइटेरिया एक था, यहाँ पे आपके मल्टीपल रेंजेस और मल्टीपल क्राइटेरियाज होंगे. ठीक है, आप 255 तक डाल सकते हो, बट एनी टाइम यू फाइंड योरसेल्फ राइटिंग मोर देन 10-15 यू हैव टू थिंक ऑफ अ डिफरेंट अप्रोच. ठीक है, तो इस केस में व्हाट आई विल डू इज, सिंस आई हैव टू स्पेसिफाई टू कंडीशंस, राइट, तो मुझे पहले चेक करना है कि रिस्कोमीटर में कितने रोज है जो हाई है. ठीक है, तो आई विल डू दैट फर्स्ट. तो मेरा रेंज डिफाइन करूंगा मैं पहले. तो मेरा रेंज रिस्कोमीटर के लिए ये होगा, कंट्रोल बैकस्पेस टू कम बैक टू द फॉर्मूला सेल. आई विल पुट अ कॉमा. When I put a comma, it highlights that I have to now put the second argument. Now here I will not hard code the criteria because यहाँ पे drop down list बना हुआ है. So I will choose the cell in which that drop down list is created. I will choose the text where the drop down list is created, which is the high. I'll put a comma. ठीक है, and now I'll choose my criteria range 2, which is the 10-year SIP return column, which is the 10-year SIP return column, which is column S. Control shift down, control backspace to come back to the formula cell. 1 second, let me just do that again. Count if S, choose the riskometer column, comma, control backspace, choose high, comma, I have to choose 10-year SIP return, control shift down, comma, control backspace to come back up. Now remember, अगर आप कोई टेक्स्ट डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, तो टेक्स्ट तो बड़ा सिंपल है. टेक्स्ट को तो आप एक सेल से रेफरेंस कर सकते हो. बट इफ आई रेफरेंस दिस नंबर 10, from the in the formula, will that give me values greater than 10? No. My condition is that I want to look at 10-year SIP returns where the returns are, or I want to count 10-year SIP returns where the returns are more than 10%, right? So यहाँ पे I can, if I choose the cell 10, the cell with the value 10, it will only show me SIP returns that are equal to 10. ठीक है, तो the method that you have to use is, you will have to, ये जो greater than और 10 का जो criteria है, इसको आप कैसे define करोगे within the formula? Please have a look. If I choose this cell directly, it is going to search for values exactly equal to 10. I do not want that. I want the values to be greater than 10. तो अगर मैं equal to greater than 10 लिखता हूँ, ठीक है, 10% डबल कोट्स में, एक तरीका तो ये है, लेकिन यहाँ पे मैं वैल्यू को हार्ड कोड कर रहा हूँ इन द फॉर्मूला, राइट. मुझे इसको डायनामिक बनाना है सो दैट द यूजर कैन लुक एट 10%, 15%, 20%, 5%, 0% एज अ क्राइटेरिया. So I want this 10 to come from a, or this criteria of the number greater than number to come from a cell. So इस case में what I will do is, now I cannot simply come and choose the cell like this because Excel does not understand कि वो cell reference है. अगर मैं डबल कोट्स में कोई चीज डालता हूँ तो Excel के लिए वो टेक्स्ट हो जाती है, और मैं सेल रेफरेंस को इस तरीके से भी डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ नहीं लिख सकता हूँ. सेल रेफरेंस तो ऑन इट्स ओन एग्जिस्ट करेगा. तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे रिक्रिएट करना है जो मेथड, जो क्राइटेरिया है. सो आई विल से greater than double quotes में I will use an ampersand to concatenate the 10. Now when I select this entire thing, if you look at the result, it is showing you greater than 10. So this is the method that you will use anytime you have to display a number, a date, greater than, not equal to, greater than, less than, greater than, equal to, in a formula, in a countif or a sumif. You will do that this way. You will do it this way. Okay. I'll simply press close and I'll get my result. Now if I change this to 5, it'll change the result. If I change to 0, it'll change the result. If I change this to 15, it'll change the result. Okay. If I make it low and I make this 0, if I make this very high and I make this 10, so it'll change the result for me. Okay. Please have a look at the formula. Please don't practice this right now. You can go back and do it. We'll be doing sum if. Okay. Sum if आप practice कर लेना मेरे साथ. Okay. If this is clear, just put clear in the chat. If this is clear, just put clear in the chat.
If this example is clear, just put clear in the chat. ग्रेट. तो इसमें जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें 3 क्राइटेरियाज हैं. जो फर्स्ट वाला है उसमें एक क्राइटेरिया है. ठीक है, तो आप वो दोनों प्रैक्टिस कर लेना. नाउ लेट अस कम टू सम इफ. नाउ व्हाट वी डिड एग्जैक्टली विद काउंट, सम भी वही करता है. द ओनली एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट इन द फॉर्मूला इज दैट यू हैव टू सम समथिंग अप, सो यू हैव टू सप्लाई अ वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट. तो मैं आपको पहले सम इफ दिखा देता हूँ. ठीक है, इसमें भी ये दो एग्जांपल इसलिए हैं कि एक जगह आप वैल्यू को हार्ड कोड कर रहे हो और एक जगह आप वैल्यू को एक सेल से रेफरेंस कर रहे हो. तो आप कोई भी एक एग्जांपल कर लेना. ठीक है, आई विल शो द सेकंड वन. ठीक है, सो इसमें आई एम सेइंग गोना से इक्वल टू सम इफ. नाउ इफ यू सी सम इफ, रेंज और क्राइटेरिया तो सेम है, बस एक सम रेंज आप एडिशन ले रहे हो कि आप कुछ किसी चीज को सम कर रहे हो. यू हैव टू सप्लाई रेंज ऑफ वैल्यूज. सो माय रेंज इज गोइंग टू बी द रिस्कोमीटर कॉलम. Right? So control shift down, put a comma, control backspace to come back to the formula cell. My criteria is going to come from Z8 जहां पे मेरा data validation already बना हुआ है, and my sum range is going to come from 3-year returns. So जो 3-year return column है, if I can quickly navigate to that, I think ये वाला है 3-year return growth of 1 lakh. I'll press control shift down, control backspace to come back to the formula cell. I think it was not G, it's I column. ठीक है, and I press enter and tells me the value. एक second, let me just check what column this is. 3-year SIP return growth of 1 lakh. This is J only, sorry, my bad. Let me revert that to J. ठीक है, so you supply the criteria and the criteria range as it is. Range डालोगे आप, criteria डालोगे as it is. The only additional argument that this will take is the sum range, कि आपको किसी वैल्यू को सम करना है basis the condition. So if you change this to low, the result will also change. If you change this to, sorry, my Excel is acting up. Let me just turn off freeze panes. ठीक है, and now I should be able to zoom in very clearly. ठीक है, so if I change this to high, the result will also change. You can have a look at the formula, you can try this out. Again, very simple. You define the criteria, first the range, then the criteria, like how you do in the count if or a count fs. The only additional argument is because you're doing a sum. Count to by default count करेगा ना. Sum के लिए आपको कोई value supply कर, you cannot sum of text values. So count के लिए you'll have to, sum के लिए you'll have to supply a range of values from a column. In that case, it will be able to do the sum for you. Okay, please try this example, everyone. Please try this example, everyone. If you are, when you finish the example, I'll wait for a few minutes. Then you can write, write 400 in the chat. Write 400 in the chat. Write 400 in the chat. One second. Great. Remember, if you're not able to write the formula right now, if you're someone who's new to Excel, that is absolutely okay. Understand the logic, go back, rework on it, right? Understanding the logic is important. Before you write any formula, we'll do a few complex ones as well towards the, after we've completed the few basic sessions. So when we move to topics like VLOOKUP and if, उस case में हम advanced examples करेंगे, right? So in that case, you will have to practice also along with me. But अगर अभी आपको सिर्फ logic समझ में आ गया है, that is absolutely fine. कोई भी complex formula भी है, irrespective whether you're working on Excel, Python, whatever language you're working with, logic अगर नहीं समझ में आया तो formula construct नहीं कर सकते, ठीक है?
Great. So you guys are done with the example. Perfect. Now this is the same one. यहाँ पे आपको बस rather than hard code, rather than supplying it from a range of cell, जैसे Z8 से आया था, यहाँ पे आपको हाई हार्ड कोड करना था बस. दैट इज द एग्जाम्पल. ठीक है, एक ही बात है. जस्ट डिस्प्ले इट हियर. सोल्यूशन शीट में यू विल फाइंड ऑल ऑफ दिस. ठीक है. नाउ लेट मी जस्ट कम टू सम इफ एस. नाउ सम इफ एस में अगेन लाइक काउंट इफ एस, आप सम इफ एस में मल्टीपल आर्ग्यूमेंट सप्लाई कर सकते हो. क्राइटेरिया एग्जैक्टली वही है. क्राइटेरिया लिखने का तरीका एग्जैक्टली वही है. अगर ग्रेटर देन 10 है तो डबल कोट्स में ग्रेटर देन साइन आएगा, फिर एंड का सिंबल आएगा और फिर वैल्यू आएगा एक सेल से. ठीक है. बट द ओनली डिफरेंस इज दैट इन द ऑर्डर ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, सम इफ में सम रेंज जो है वो आखिरी आर्ग्यूमेंट होती है, सम इफ एस में सम रेंज जो है पहली आर्ग्यूमेंट होती है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. दैट इज द ओनली डिफरेंस. तो अगर इफ आई कम टू सम रेंज, I want to sum up 3-year SIP returns. ठीक है. So let's come to my column which has my 3-year SIP returns, which is this one. I choose my values, control backspace to come back to the formula cell. Criteria range क्या है? मुझे रिस्कोमीटर हाई चाहिए, तो मैं रिस्कोमीटर कॉलम में आऊंगा, कंट्रोल बैकस्पेस, हाई कहां से चूज करूंगा मैं? Z8 से. कंट्रोल बैकस्पेस टू कम बैक टू द फॉर्मूला सेल. फिर मुझे देखना है 10-year SIP रिटर्न्स ग्रेटर देन 10 होने चाहिए. तो I'll just come to 10-year SIP return column, put a comma, control backspace, greater than का सिंबल आप डबल कोट्स में डालोगे, एंड लिखोगे और 10 को यहां से चूज करोगे. 10 को यहां से चूज करोगे. It is the same formula that we wrote in the countif. It is the exact same formula that we wrote in the countif. The only difference is that here you have to sum something up. That is why you are using a sum if. And remember, when you're writing a formula, जैसे इस केस में multiple criteria और ये सब है, it is advisable, it is a good practice to break your formula into different lines. कैसे करेंगे? किसी भी कॉमा के बाद alt enter दबाएंगे, किसी भी कॉमा के बाद alt enter दबाएंगे, break it into logical lines so that it is easy for you to read the formula. There is no improvement in the formula performance or anything. It just allows you to it just makes the formula more readable. It just makes the formula more readable. ठीक है. alt enter, कॉमा के बाद alt enter दबाएंगे, तो it will break the formula into different lines. Please try this, everyone. Please try this. If you are done with the example, once you finish it, please put 500 in the chat. G, any question? Yes, Kashif. Yes, sir. There are two alt buttons on the keyboard, one on the left and the other on the right side of the space bar. Does it make any difference if I use the left alt or the right alt in alt enter? Yeah, only the left one Yeah. works for some reason. The one to the Yeah, left yeah. of the This silver, is what I wanted to ask. Only the left one works. so ये तो even I don't know why. So I've been doing it, so मेरा intuitive है, but I'll just check अगर कोई there is a reason. But left वाला alt key will work. The one to the Yes, left of only the the screen. left one works. Only the I left one thought works. there was something wrong with my system. No. It is by default. I never googled the reason for it, but I think it's high time I should know the reason why it does not work. ठीक है. When you're Thank done with the example, you're welcome. Perfect. I'll just wait for a few more minutes. ठीक है. तो जो बाकी अगेन जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें 2 की जगह 3 क्राइटेरिया आपको देने हैं. जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें क्राइटेरिया आपको हार्ड कोड करना था. तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें क्राइटेरिया हमें हार्ड कोड करना है. तो रादर देन गेटिंग दैट 10 फ्रॉम अ सेल, आपको इस तरीके से लिखना था उसको बेसिकली. नो अदर रीजन, नो अदर डिफरेंस. रिमेंबर टू क्लोज डबल कोट्स एंड क्लोज योर ब्रैकेट्स whenever you add it. ठीक है. Cool. I hope this is clear. Now, I know there are 3 sheets remaining and we'll not be able to do all 3 of them. I want to do the second one, third last one, which is if error. ठीक है. काउंट रोज और काउंट इंस्टेंस मैं नेक्स्ट टाइम कवर करूंगा या मैं एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा. ठीक है. However, we are able to compensate for the time. ठीक है. Now, if error क्या होता है basically? If you come to the if error sheet, everyone on my screen. ठीक है. If we have time, we'll do it. If we don't have time, I'll create a video for you or I will do it in the next session. ठीक है. So what happens a lot of time when you write formulas, जैसे इस केस में the formula is very simple. You're getting the change percentage. कितना percent change है from last year to current year to last year? What is the growth percentage? ठीक है. Or the change percentage? Is it positive, negative, etc. Now in that case, when I do not have a value, when I get an error as a return from the formula,
A lot of times I do not want to display that error. A lot of times I do not want to display that error. तो एक तरीका ये है कि मैं delete कर दूं. लेकिन I want the formula to exist because if tomorrow the value gets updated, right? I want the formula to recalculate the value for me. तो मैं इस formula को यहीं रहने देता हूँ, ठीक है? इस formula को मैं यहीं रहने देता हूँ. And what I'll do is I'll show you how you can do it in the other cell. Just besides that, तो ये आपका default formula डाला हुआ होगा यहाँ पे. अगर आपको if error लिखना है, अगर आपको if error लिखना है, ठीक है, यानी if error का मतलब क्या होता है? Basically, if there is an error, what do you want to do? That is the whole point of the function. It's very self-explanatory. अगर error है तो what do you want to do? So I say if error, ठीक है. Now if error में it will ask me for a value, right? So if I say that this is the value that I want to check, and I say that if there is a value, I want to show an error, I'll say data missing. कोई भी टाइम आप डबल कोट्स में डाल रहे हो तो टेक्स्ट हमेशा डबल कोट्स में होगा, ठीक है. इफ आई जस्ट कॉपी दिस फॉर्मूला डाउन, तो जहां पर भी यहाँ एरर था, जहां पर भी यहाँ एरर था, वहां टेक्स्ट आ गया जो है डेटा मिसिंग, जो है डेटा मिसिंग. नाउ कैन आई इंटीग्रेट दिस फॉर्मूला which is calculating the change with the if error? Yes, I can. How do I do it? Please have a look. Combined formula लिख देते हैं इसको. Let me show this also यहाँ पे. And मैं आपको स्टेप्स में दिखा रहा हूँ, इंटरमीडिएट स्टेप्स में, ताकि आपके लिए टू अंडरस्टैंड इट बिकम्स इजी. कॉपी दिस. तो व्हाट आई एम बेसिकली डूइंग नाउ इज, यहाँ पर जो मेरा फंक्शन था, ये था मेरा जो फॉर्मूला था जो चेंज परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है, उसके पहले मैं लिखूंगा इफ एरर. नाउ बिकॉज दिस फॉर्मूला C3 divided by B3 minus 1, current year minus last year, current year upon last year minus 1 will give me the change percentage, the growth or the degrowth percentage. Now that formula is resulting into a single value. Like you can see on the left, the formula is already resulting into a single value. Now I want to supply that value, जो भी result आ रहा है, I want to supply that result in the value argument of the if error formula. When I put a comma, after, so what it is going to do is, remember Excel calculations happen row by row. So ये इस रो में चेक करेगा रिजल्ट क्या है. अगर रिजल्ट एक नंबर है, एक्यूरेट है, एरर नहीं है, तो वो रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा. अगर रिजल्ट एक एरर है, तो आई कैन से दैट व्हाट डू आई वांट टू डिस्प्ले. आई कैन स्पेसिफाई व्हाट डू आई वांट टू डिस्प्ले, एंड इन दिस केस आई कैन से डेटा मिसिंग. एनए आप कुछ भी लिख सकते हो. आपको कुछ ब्लैंक छोड़ना है तो आप सिर्फ डबल कोट्स ओपन क्लोज कर दो, तो ब्लैंक एज एन आउटपुट आ जाएगा. एंड इफ आई सिंपली कॉपी दिस फॉर्मूला डाउन, ठीक है, तो जहां पे एरर है वहां पे वो ब्लैंक दिखा देगा, जहां पे एरर है वहां पे वो ब्लैंक दिखा देगा, ठीक है. fairly simple formula. You can try it out right in front of your screens, right? It has only two arguments, if error, and it is typically used in combination with other formulas to check if there is an error, what is the value that you want to display. This is the last example for the day. Count errors or count instance में आपको next time कराऊंगा. मेरे को remind करा देना in case रह जाएगा तो. Before I start the next topic, इन दोनों को मैं cover कर लूंगा. Rest everything, whatever I have not done, the example, that is for your practice. ठीक है. आप इन दोनों को भी ट्राई करके आ सकते हो. अगर किसी को नहीं डाउट होगा तो we'll continue, but I'll still demonstrate for everyone else's reference. ठीक है. If you're done with this example, you can type final in the chat. You can type final in the chat. And anyone else, any questions on whatever we've done so far, please let me know. Anyone else, any questions, do let me know. Great. I hope everything is clear. ठीक है. I'll stop the recording then.